हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू विशाल क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नया वीडियो। वो है हमारा एमकॉम पार्ट 2 अकाउंटिंग पेपर थर्ड एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। मेरे को ये बहुत रिक्वेस्ट आई है कि मैम आप पीछे जो टेक्स्ट बुक के जो पीछे हमारे क्वेश्चंस होते हैं उन सभी के आंसर्स हमें बना के उसका वीडियो दीजिए। तो आज उन्हीं का वीडियो लेके आई हूँ। तो ये वीडियो में आपको मैं सभी आंसर्स बताने वाली हूँ। तो आप फटाफट अपनी टेक्स्ट बुक ले लीजिए। अगर आपके पास पीडीएफ हो तो पीडीएफ ओपन कर दीजिए साइड में और ये आंसर्स मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए। और इसके बाद एक और वीडियो में लेके आने वाली हूँ अलग से ट्रू एंड फॉल्स के जितने भी पूरे टेक्स्ट बुक में ट्रू एंड फॉल्स है उनका वीडियो मैं अलग से बनाई हूँ। यहाँ पे सिर्फ हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। वीडियो को आखिरी तक बने रहिए। और भी एमसीक्यूज हमने हमारे वेबसाइट पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने अपलोड्स किए गए हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो उन सभी के लिंक्स मैं आपको आखिरी में बता दूंगी कहाँ पे हैं किधर है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छा लगे इन्फॉर्मेशन लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जितने भी आपके स्टूडेंट्स फ्रेंड्स आपके जो भी कलीग्स हैं जो एमकॉम पार्ट 2 कर रहे हों वो भी अकाउंटिंग में, तो उन्हें ये वाला वीडियो ज़रूर शेयर कर लेना। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ लेसन वाइज लेके आई हूँ, तो जिससे आपको क्या होगा इजीली होगा समझने में और पढ़ने में भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेसन है नेचर एंड द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुड एम एट इन्वेस्टमेंट इन असेट्स ओनली व्हेन दे आर एक्सेप्ट टू अर्न अ रिटर्न ग्रेटर देन द मिनिमम एक्सेप्ट रिटर्न इन द टर्म एज। तो इसका आंसर होता है हम्बल रेंज। द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट लुक एट ऑल ऑफ द above. The modern approval of financial management views the assets to acquire. The financing of long-term assets should be made from long-term funds. In the fundraising decisions, the one should keep in the view. क्या व्यू हमें हमेशा ध्यान रखना है? Advantage and disadvantage of the debt compound in the capital mix. The financial health of the firms depending on its ability to the general staff's cash to pay its employee, supply, creditor and the owner. Liquidity and the probabilities are different goals for the financial manage. Wealth maximize means maximize the NPV of the course of active. Wealth maximize objectives consider the risks and the time value of money। यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पूरा कैलकुलेशन कैसे यूज़ करना है किस तरीके से आप सम करना है उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है और ये वीडियो की लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में डाल रही हूँ, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने लाइफली कैलकुलेशन यूज़ किया है और कैलकुलेशन में इजीली ट्रिक्स बताई हैं कि कितने भी बड़े सम्स हो उनको कैसे हम इजीली वे कर सकते हैं। वो सभी चीज़ें मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं विच प्रोविजन मनी इज द टाइम वैल्यू, इट इज़ इंटरेस्ट रेट। How many years will you expect to double your money at 8% per annum? Is the 9 year. When the payments are made at the end of the year, it is known as originally annuities. When compounding is done more frequently than the annual, the effective rate of the interest is greater than the nominal rate of interest. The very high current ratio will be not affecting the probabilities. One of the following is not an absolutely liquid assets. कैश इन हैंड असेट से लिक्विड असेट्स नहीं होता है, कैश एट बैंक भी नहीं होता है, बिल रिसीवेबल नहीं होता है। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ लिक्विडेबल असेट है। ये सब कैश इन हैंड फट लिक्विड असेट्स है, कैश एट बैंक भी लिक्विड असेट्स है एंड बिल रिसीवेबल भी लिक्विडिंग असेट्स है। Fixed interest bearing fund do not include one of the following is a public deposit.
The rate of the cell value per square root of the floor space is not suitable for the wholesale warehouse. The term cash profit indicate net profit plus depreciations. The return on equity indicate measure of profitability. Return on investment can be increased by all of the above: increase the profit margin, reducing the investment capital, and increasing the investment turnover. The profit margin of the BS Limited is 7% while the turnover is 3 times of its capital. The return of investment of the concept is, मैंने यहाँ पे साइड में एक फॉर्मूला लिखा है, आप देख सकते हो, नेट प्रॉफिट स्लैश डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल। तो मैंने अभी जो सेल्स दोनों में थे इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, हटा दिया। बचता क्या है, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो आपको देख सकते हो कैपिटल दिया है 3 ऑफ इट्स बराबर, और नेट प्रॉफिट यहाँ पे दे दिया है हमें 7%। ये मल्टीप्लाइड हो जाएंगे तो यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट का आ जाएगा 7/100 करेंगे तो 0.07 इंटू 3 टाइम ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, इस तरीके से हमें मिल जाएगा यहाँ पे 21%। The current ratio is given as a 2.5. Liquid asset are the 16,000. Then the value of stock will be the, वापस सेम फॉर्मूला है, इसी तरीके से हमें यूज़ करना है। जो फॉर्मूला मैं नीचे बताऊंगी उस वही फॉर्मूला यूज़ करोगे। 40,000 इसका आंसर है। If the current ratio and liquid ratio of the firms are 2.2 and 0.2 respectively, and its current liabilities is the rupees 10 lakh, the value of stock held by firm is rupees slash। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी करेंगे तो 2.2 है, करंट लायबिलिटी हमें 10 लाख दिया हुआ है तो देयरफॉर करंट असेट मिल जाएगा 22 लाख। करंट असेट्स में से अगर मैं स्टॉक माइनस स्टॉक अपॉन लायबिलिटी कर देती हूँ तो उसको इजिकल टू मेरा 0.8 फॉर्मूला है यहाँ पे मेरा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आंसर मुझे मिल जाएगा 14। तो इस तरीके से ये वाला सम हमें करना है। The current ratio of BM Limited is 2.2:1 while the liquid asset is 1.8:1. If the current liabilities are rupees 14,000, the value of stock will be, तो इसका आंसर है 8,000। किस तरीके से आया बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का मेरे को दिया है 2:1, करंट असेट नहीं मालूम, करंट लायबिलिटी दिया है 40,000, अपन लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी ए मिल जाएगा 18,000। अब क्या करना है, क्यू आर इज इक्वल टू एल ए अपॉन एल ए, लिक्विडिटी असेट अपॉन करेंट लायबिलिटी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा स्टॉक। लेकिन ये जो लिक्विडिटी असेट्स है इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सी ए माइनस स्टॉक करेंगे, तभी जाके हमें आंसर यहाँ पे मिलेगा। Wafer company having the net profit capital of rupees 3 lakh has the current ratio of 1:8 and liquid ratio is 1:6. The value of stock is 55,000. Asset management ratio are used to measure the speed with the various account are covered into, किस में कवर करते हैं कभी हमेशा, सेल्स और कैश में। The firm skipped to increase its current ratio from 1:5 before the closing date of the account. The action that will make it possible is making the cash payment to creditors. तो यहाँ पे हमारा ये लेसन भी ख़त्म हो जाता है, न्यू लेसन में आ जाते हैं हम यहाँ पे। The degree of operating leverage is the percentage change in operating income that the result from percentage change in sales. The higher level firm is more quickly than its peer. The advantage of debt finance is lowers the cost of capital. Combined leverage is a percentage change in relationship between sales and earning per share. The interest expense for the firm rise. We know that the firm has taken on more financial leverage. Investment decisions 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे।
The long-term decisions are called as capital budgeting decisions. Capital budgeting decisions involve the huge amount of risk due to the time factor. Payback period is the time required to recover the original investment. NPV method is most modern. PI is the proportion between the PV of cash inflow and the PV of cash outflow. The method which does not consider the investment profitability is payback. The most reliable method for financing capital budget decision NPV. The P limited in adding a new product a line which required an investment of rupees 14,54,000. The life of product will be the 10 year and will generate cash flow of rupees 3,10,000 for the first year, rupees 2,18,000 for the next year and 2,40,000 for each year. Therefore for the 8 year the payback period will be the, इसका आंसर है 7 years and the 7.2 month. The cost of project A is of 2,72,000 or often 8 annual net cash inflow for rupees 60,000. The expected rate of return is 14%. The NPV will be the 6,340. PI is the provided between the PV of the cash flow upon investment. In placement of decision, market value of XI asset is considered as the cash flow. The working capital required is treated as cash outflow. Retirements compensated to employee is treated as cash outflow. Under capital routing situation, the method used to rank the individual project is NPV. Management of working capital. Working capital is excess of current assets over current liability. आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर देना। और अगर आपको मेरे इस जो मैंने अभी आपको पढ़ा रही हूँ एमकॉम फाइनेंस के अगर फुल वीडियो देखना है और फुल लेसन्स आपको मैं एक ही वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है तो उस वीडियो की लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन पे दी हुई है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। और उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, फुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए हैं तो वो आपको अच्छे से समझ जाएगा। The gross working capital is equal to gross current assets. The permanently working capital is the minimum working capital required. Seasonal working capital is required to meet the seasonal needs of. Long the process periods, larger will be the working capital. Shortage of working capital may result in the poor credit worthiness. Operating cycle period can be reduced by increasing the period of credit allowed. Excess investment in the current asset results low probabilities and high liquidities. मेरे इसका आंसर क्या हो गया D, क्योंकि B and C both are right. Higher cash bank balance, decreasing profitability. Working capital finance is rise for all of the above: bank overdraft, cash credit and bill finance. Spotted source of the working capital is all of the above: trade creditor, bill payables and the note payables. Interest loan from the source of including A and B both are right: return profit and the depreciation. External short-term source include all of the above: bank overdraft, cash credit and the public deposit. Cash credit is a permanent against, same is answer A and the B, pledge and the hypothecated. MPBF refers to maximum permission bank finance. Public deposit are except for the maximum of 3 years.
The movements of holding cash involves all of the above. The cash budget represents cash receipt and payment. The model which suggests that cash should be managed in some way as inventory is Baumol model. The ability of cash in the future after constitution of the financial component is known as liquidity. One of the following is not an objective of cash management is a cash imbalance. Following is not an element of cash budgeting. It is determinant of cash structure. तो यहाँ पे हमारा मैंने आपको सभी MCQs के आंसर्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रू एंड फॉल्स बताने वाली हूँ। ट्रू एंड फॉल्स के सभी आंसर्स आपको वहाँ पे अपलोड्स हो जाएंगे। और एक और वीडियो आपके आने वाला है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के शॉर्ट एंड स्वीट्स में नोट्स लेके आई हूँ मैं। तो वो सभी सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंस फॉर्मूलाज हो गए हैं, जो भी इम्पोर्टेंस होगा लेसन वाइज में वो सभी मैं वहाँ पे बताने वाली हूँ। तो ये फटाफट आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल को लाइक कर लो, बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर देना कि मेरे चैनल पे इस तरीके के वीडियोस आते ही रहते हैं और मैं रेगुलर बेसिस पे डालती हूँ। और कोशिश करूँगी आज के आज ही आप बाकी वीडियोस भी मैं अपलोड कर दूँ। तो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट्स।